Hello everybody, welcome back to another session on Modern C. We have completed IO operation in C++. We have seen how different types of data can be accepted and displayed. We have seen. Now that we know how to accept data and how to display data, it's time for us to understand how we can carry out operation on the data. The point is like any program that we write is with the intention of manipulation of data. If there is no data, there is no point in having a program. Programs, the very reason why program exists is because there is some data which needs to be manipulated. If there is no data, we don't need any program. So every program is there to carry out some kind of manipulation of data, some kind of transformation of the data. And that's what we're going to understand. What are the various ways in which we can go ahead and carry out operations on the data. So today's topic for discussion is a concept of operators in C. Now this term operator is definitely not new to you all. You all are aware of this concept called as operator. Now when I use the word operator, what comes to your mind? Operator. Addition, subtraction, multiplication, Okay, division, modular. very good. So what you have listed, Rohit has listed, are various operators. Okay, but let's now talk more about this concept of operators. So today's topic for discussion is operators in C, and we are trying to understand what is this topic called as operators. So somebody, I think it was Rohit. Rohit answered what are operators. Rohit, you do not tell me what are operators. You give me examples of operators. My question is what are operators, and Sir, what you have it was given not is examples. It was not Rohit, it was Raviraj. Achha, it was Raviraj. So Raviraj, you have given me examples of operators. You did not explain what is an operator. Sir, the tool needed to do operations is known as Pardon? Tool needed to do operations is known as Tools needed to do operation. Okay, that is a very nice term he has used. Tool. Okay, so there is some tool that is needed to carry out operations. Very correct. It's a tool that is needed. What is that tool? And how do you use that tool? Huh? And Raviraj has cited some examples of those tools. So this is a tool that is needed to carry out operation. Okay, and believe me, that tool doesn't carry out an operation. So, or let's say put this way: if I say 5 plus 3, so in that case, what is the tool that is carrying out the operation? Plus addition. Okay, so plus is a tool that is carrying out operation, and that is not the case. Plus is a way, listen, plus is a way to specify what operations you want to carry out. So you are telling the system, I said 5 plus 2, that means I want to carry out operation of addition. The operation is addition, and that plus is only a symbol, and that symbol represents what operation you would like to carry out. So operators are only symbols: plus, minus, into, divide. And what do? They tell the compiler. What do they tell the compiler? When I put that plus sign, oh, I want to carry out operation of addition. When I put that modulus sign, oh, I want to carry out operation of division and get me the remainder. When I put that slash, it says, oh, carry out division and get me the quotient. So these are symbols: plus, minus, into, divide. These are symbols. Just like A, B, C, D are symbols. They are also symbols. But these symbols convey, tell the compiler, what operation are you planning to carry out, or do you want it to carry out? So we are telling the runtime system, the compiler, here I intend to carry out this operation. So wherever I write plus, please do operation of addition for me. Please perform operation of addition. So it's a tool, it's a symbol, and that symbol represents what operation are we interested in. So while this plus was just a symbol that was representing what operation are we interested in, then what was that 5 and 2? Yes, Raviraj had written A plus B. So what was that A and B? A and B were identifiers. So that was a not good choice. Number 1 plus number 2, that were identifiers. They were identifying the location of the memory where the two values were stored. And so we wanted to carry out operation of addition on those values. So let's understand what is this operators. So these are symbols that represent some operation we perform on the data value. Now, when you talk about data, the operators, these are symbols. These operate on what? Either the constants or variables. So when I say 5 plus 2, that 5 and 2, both of them are constants, fixed value. 5 is 5, 2 is 2, that will never change. But if you look at the previous program that we had written, there is our program here, the program that we had written, where we had this number 1, number 2, sum. And then here when we said sum is equal to number 1 plus number 2, let's focus on this part, num plus num2.
I am not really interested in adding num1 and num2. Num1 is an identifier that identifies some location in the memory where the first number has been stored. Num2 is an identifier which identifies some location, address, some location in memory where the second value has got stored. And ये num1 and num2 जिस लोकेशन को रेफर कर रहे हैं जहां कोई वैल्यू स्टोर्ड है उन दो वैल्यूज को आप ऐड करना चाहते हो. तो ये प्लस ऑपरेटर operates on variables, correct? Or it could have operated on constants. Look at this, 10 and 20, any number of times if I run the program, तो चलो ये सम ऊपर लिख देते हैं. अब मुझे बताइए ये जो लास्ट वाला सम है इसका आंसर क्या प्रिंट होगा? यस, लास्ट वाले सम का आंसर क्या प्रिंट होगा? 40. ऑलवेज 30. जिंदगी भर रन करते रहोगे तो इसका आंसर 30 होगा. इसका आंसर बताइए क्या आएगा लाइन नंबर 17 का? जो हम इनपुट देंगे उसका एडिशन. That means every time you run the program, user may give different values. Yes, Right? yes. So variable whose value can be different at different times. Whatever may be the value at that instance when the program ran, उसका total दे देगा. So your operator can operate on variables, or it can operate on constants, or it can operate on combination of both. Means something like this. So I have various expressions that have been written over here. अलग-अलग expressions है. I could have said num1 plus 30 ऐसा भी लिख सकता था. तो here I could have said 10 की जगह %d, यहाँ भी लिखता हूँ %d, और यहाँ लिखता हूँ कॉमा num1 comma 30 comma sum. That's also okay because in the argument list I can also give constant. So whatever may be your number 1 का value, number 1 सब जब आपने 100 दिया था तो 100 plus 30 is equal to 130 करके आंसर प्रिंट करेगा. तो your operator can operate on variables, your operator can operate on constants, your operator can operate on variables and constants. It can be anything, but all of them are representing some data. This is a fixed value representation, and this is a fixed value representation. Here variables value may change. That's the only difference that is there, but all of them are representing some other value. So operators operate on constants or variables known as operands. These operators can be classified in multiple ways. So how can we classify? Depending on how many operands do they act upon, they are classified into 3 types. So even before I go ahead with this example, let me know this plus operator was currently operating on how many operands? Operands are data values on which it is operating. So plus over here was operating on how many operands? Quick. 2. 2 operands. एक था आपका num1 और एक था आपका num2. So it was operating on 2 operands. तो num1 और num2 का जो एडिशन है समझो 100 आ जाता है. That is stored by using equal to operator into sum. So equal to is also an operator which is operating on 2 operands. कैसे? The result of this is now assigned to sum by using this equal to. And we know since our school days that's what will happen. That means first this expression will get solved. इसका जो भी आंसर x आएगा, that x will now get stored into sum. So here equal to operator is also operating on 2 operands. So depending upon how many operands does an operator operate upon, operators are classified into multiple types. First is unary operator, they will operate only on a single operand. There are binary operators, they will operate on 2 operands. They will operate on 2 operands. जैसे अभी plus minus लिया. And there are ternary operators which will operate on 3 operands. So luckily there is only one ternary operator in C, that is question mark colon. But you have multiple unary operators, you have multiple binary operators. But mark यहाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. देखो, there is a unary plus and there is a binary plus. दो अलग ऑपरेटर्स हैं, unary plus and binary plus. Let's talk about these unary operators first. Let's talk about these unary operators before we go ahead. So you plus, minus, plus, minus, minus. Let's talk about operators. But then when I'm talking unary, that means they will operate on single operand. How do I represent it operating on a single operand? That means if I'm writing an expression, if I said this number 30 है, तो ये नंबर 30 की जगह मैं कहता हूँ यहाँ -30. तो व्हाट विल हैपन? या माइनस नंबर. तो ये नंबर का जो वैल्यू है अब उसका माइनस कर दिया तो निगेटिव आ जाएगा. नंबर अगर 10 था तो व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन बी नाउ इफ नंबर वाज 10? आंसर बोलो सर, सम क्या आएगा? -40. -40 आएगा. दैट्स वेरी करेक्ट.
So if I go on to display this, it will display -40. Why? Because अगर आपने 10 दिया था, तो it will become -10. -10 plus -30 will become -40 and will display -40. Okay. So this was operating on a single operand. But यही माइनस मैंने यहाँ लिख दिया होता, then the story would have been different. Number minus this, अगर नंबर का वैल्यू 10 था, तो 10 minus 30 कितना आएगा? -20. -20. So the result is different. तो ये binary था and that was unary operator. And now if I say minus num minus 30, that will also give a different result. So depending upon whether it is operating on two operands or single operand, the meaning of that operator really changes. But again, there is a different way of classifying. We can also classify operators based on the type of operation that they perform. Means we can have arithmetic operators like plus, minus, into, divide, plus, plus, and so on. We can have relational operators that are meant for comparing two values, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, equal to, and so on. And there are a few more. Logical operators like and, or, not, which I'll teach you. And then there are something like bitwise. This will be a totally new aspect for us. Left shift, right shift, bitwise and, bitwise or, XOR, and so on. अगर engineering किया तो आपको ये कुछ याद रहेगा. But these are various operators which are there. So you can classify operators based on how many operands are they operating as unary, binary, ternary. Unary will operate on a single operand, binary will operate on two operands, ternary will operate on three operands. बस यही तीन types है based on classification based on how many operands that they are acting upon. And दूसरा classification based on what is the type of operation. Arithmetic है, relational है, logical है, bitwise है. So I'll discuss both of them simultaneously. So we start a discussion with arithmetic operators. So in arithmetic, we have unary arithmetic operators like plus, plus, minus, 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 and plus. These are unary arithmetic operators. And we also have binary arithmetic operators. Binary में कौन सा है? Plus, minus, into, divide, mod. ऐसे अलग-अलग अपने पास operators हैं. अब इनमें से बताइए आप मुझे कौन सा operator है जिसका मतलब आपको पता नहीं है, so that I can discuss that operator. Come on, tell me, कौन सा operator चाहते हैं आपकी मैं discuss करूं? नहीं तो you will have to answer, हाँ? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाला. Okay, वो एक discuss करें. चलो, वो एक. Anything else Sir, that you want me to discuss? arithmetic में plus plus और minus minus. वही the same thing is it. Okay, anything else? तो ये दो ऑपरेटर्स में आपने कहा है डिस्कस करें, तो इन दोनों को डिस्कस करने की जरूरत है क्या? प्लस एंड माइनस. नो, एंड द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर मॉड वाला. ये डिस्कस करने की जरूरत है. प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, वो पता है. इनटू का मॉड. मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब क्या है. So there are two things that he has highlighted. So the things that he has requested are these two. एक ये दो operators and this is another operator that he has requested. Okay. So while you have done that, let me check. अँड Do you- सर युनरी आणि बायनरी मध्ये जे प्लस प्लस आहेत ना, डिवायडेशन मल्टिप्लिकेशन, Louder? त्याचे एकच यूज आहेत ना. Pardon? जे युनरी आणि बायनरी मध्ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आहेत ना, हा. तर त्याचे प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन डिवायडेशन वगैरे त्याचे सगळ्याचे एकच यूज आहेत ना. एकच यूज आहेत ना. ना ना मीनिंग वेगळं आहे ना. हा युनिटचा मतलब वेगळा आहे, हा बायनरीचा मतलब वेगळा आहे. हा ऍडिशन करतोय, हा ऍडिशन नाही करत ना. प्लस 5 विल इट ऍड एनीथिंग टू 5? Yes or no? Plus 5 if I write, will it add anything to 5? नो, But 5 plus 2? Yes. ऍड होएगा. हाँ, तो दिस इज नॉट एडिशन. ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये एडिशन नहीं है, ना ही ये सब्ट्रैक्शन है. सो ये है एक्सप्लेन आपका दैट एडिशन एंड आल्सो. सब्ट्रैक्शन है. These are not addition and subtraction. ये ऊपर वाले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं है. Okay. Now, although you have told me that कुछ ये डिस्कस करे या ना करे, I'll still start with some very basics. Okay. And let us see whether you get them right. अगर आंसर सही आते हैं तो मैं जल्दी खत्म करूंगा, अदरवाइज रिपीट करेंगे.
Okay, is the screen visible? Program visible दिखाई दे रहा है? No. No, sir. Now look at this. मेरे पास एक वेरिएबल a है. Now रविराज मुझे गाली देगा, सर ये कैसे लिख रहे हैं? अभी आपने कहा था कि बकवास कोड है. अरे उस कोड में कॉन्टेक्स्ट था. मैंने कहा था दो इंटीजर एक्सेप्ट करो, उनका एडिशन कर लो. यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. This example is not about solving some real life problem. It's only to understand the operators. So we don't have any context. So I just said a. Just to avoid that, you could just say num1. That's also okay. But then यहाँ कोई context नहीं था. Our focus is only on operators. तो इसीलिए मैं a use कर रहा हूँ. a का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है. Now tell me what did it print on line number 6? +5. And it Plus will go on 5. next line. Okay, and it will go on next line. What will print on line number 10? Minus है. अरे यहाँ प्लस लिखा है ना. यहाँ अगर प्लस लिखते हैं तो क्या होता है? What happens when I write plus? It will get added. Come on, No, what happens if I say between percent? हाँ, it but is sir ते percent sign- येणार ना तिथे प्लस तो हे ना Sir, it is sign unary आहे. specifier. Unary sign arithmetic. specifier. What do you mean by sign specifier? It specifies it if it's positive or negative. It specifies if it's positive or negative. That's not explanatory enough. सर ते unary operator है. Nine. It's not a unary operator. Come on, it's a size specifier. Okay, it's a sign specifier. We have used that format modifier with printf. हम डिस्कस किया है, बताइए जल्दी. सर प्रोग्राम ओपन करा. नहीं, प्रोग्राम से क्या संबंध है? परसेंट प्लस डी क्या होगा बताइए. mod plus decimal value. Any number that I am trying to print, अगर मैं परसेंट और फॉर्मेट कोड के बीच में प्लस डालता हूँ तो ओनली साइन गेट डिस्प्ले, विदाउट विच +5 विल नेवर गेट डिस्प्लेड एज प्लस. तो कैसे भूल जाएंगे ऐसे? प्रिंटफ अभी से भूलने शुरू किया, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ हमने प्रिंटफ डिस्कस किए हुए, तो कैसे चलेगा? तो इफ आई राइट दिस पर्टिकुलर कोड और अगर मैंने इंटीजर में भले यहाँ +5 लिखा था और अगर मैं बिफोर ए प्रिंट करूंगा तो नथिंग विल गेट डिस्प्लेड. इट्स ओनली ए का वैल्यू बिफोर ए 5 प्रिंट करेगा. इट विल नॉट से +5. इट विल नॉट डिस्प्ले द साइन. If I run this particular code, it will not display sign. क्या है output? 5. 5. It is not display sign. And if I say plus, it will display sign. ऐसे कैसे भूल के चलेगा? Modifies to specify sign. Note में लिखने बोला था मैंने. अब प्रिंट करोगे, अब जाके +5 आ रहा है. तो अगर ये -5 भी होता तो -5 इसका मतलब नहीं +-5 आएगा. Plus, if it appears between person sign and format code, it displays the sign. Whatever is the sign. -5 तो माइनस, प्लस है तो प्लस. अगर आपने यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो भी प्लस साइन प्रिंट करेगा. बाय डिफॉल्ट प्लस साइन इज नेवर डिस्प्लेड. इट गेट्स डिस्प्लेड ओनली व्हेन यू से प्लस. बट दैट प्लस डजंट मीन डिस्प्ले ओनली प्लस. डिस्प्ले प्लस मींस डिस्प्ले साइन. नंबर नेगेटिव तो माइनस, नंबर पॉजिटिव तो प्लस. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. ओके, नाउ कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, ये आपका +5 है. अब मुझे लाइन नंबर 10 का आउटपुट बताइए, क्या प्रिंट करेगा? कौन यार, जल्दी बोलो. Sir, -5. -5 प्रिंट करेगा. करेक्ट. कैसे? -5. हाउ एक्सप्लेन करो ना. यहाँ तो मैंने माइनस Sir, लिखा है. after ये first प्लस है. printf, हाँ, after first printf आपने वो -a कर दिया. A करेक्ट. सो व्हेन आई से -a व्हाट विल हैपन? Sir, a की वैल्यू 5 थी, अब वो -5 हो गई. वेरी करेक्ट. ए का वैल्यू जो 5 था अब क्या हो जाएगा? -5. -5. तो यहाँ प्रिंट करो तो क्या प्रिंट करेगा?
minus Sir, five. -5. -5. Let's run this particular code and see. गलत हो रहा है, पहले भी +5 बाद में भी +5 प्रिंट कर रहा है. इट इज नॉट हैपेंड. लेट्स डू वन थिंग. समझो ये माइनस था तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा? लाइन नंबर 6 minus five. -5. -5. और आपका जो अभी लॉजिक लगाया आपने उस हिसाब से यहाँ क्या प्रिंट करेगा? +5. +5. So that's what you are expecting. But let's compile the code and see. And then आपको एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिख के रखना है, हाईलाइट करके रखना है उस स्टेटमेंट को. पहले भी -5 बाद में भी -5. That means सर ये statement माइनस ए को हमने डिफाइन ही नहीं किया है सर, मतलब वो क्या है माइनस ए को? listen, a is a variable, minus is an operator. अगर डिफाइन नहीं किया होता, अगर मैं यहाँ ad लिखता तो इट वुड जनरेट एन एरर. तो ad नाम का कोई चीज नहीं है, a नाम का वेरिएबल है और माइनस उस पर एक ऑपरेटर है जो अप्लाई किया जा रहा है. अब ये एरर देगा. लुक एट दिस, दिस इज जनरेट एरर. ये बता रहा है कि ऐसा कोई चीज आपके पास डिफाइंड नहीं है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल. आपको ए लिखना था क्या, तो पूछ रहा है, और गलती से क्या आपने एडी लिखा क्या, ऐसा एरर मैसेज भी पूछ रहा है आपको. एडी इज अनडिफाइंड, ए इज डिफाइंड एंड माइनस इज एन ऑपरेटर एंड दैट ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन ए. बट देन अभी स्टेटमेंट क्या लिखना है, लिख के रखो. Most of the operators do not alter the value of the operand on which they operate. लिख के रखो, explanation बाद में. Most of the operators, okay, of the operators do not alter the value of the operand on which they operate. Here in this case, operator is minus, operand is a. So So minus, yes. most of operators do not alter value of operand. क्या पुढे काय होतं? अरे यार, इसी समय कोई- most of the operators do not alter the value of the operand on which they operate. Okay, thank you. Okay. तो यहाँ ऑपरेंड क्या है? a है. ऑपरेटर कैसा है? माइनस है. तो -a लिखने से a की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली. इट इज नॉट गोना अल्टर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड. तो a का वैल्यू जो पहले था वही बाद में रहेगा. अगर आपने +5 लिखा था तो अर्लियर पहले भी +5 था और बाद में भी +5 रहेगा. दे डू नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड ऑन व्हिच दे ऑपरेट. भले आपने यहाँ ऑपरेट किया है, कोई उसका इंपैक्ट नहीं रहेगा. नो इंपैक्ट एट ऑल. लेट मी कैंसिल दिस डिबगिंग एंड लेट्स रन दिस कोड डायरेक्टली एंड लुक एट दिस. पहले भी +5 और बाद में भी +5. दे डू नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड ऑन व्हिच दे ऑपरेट. तो इसका मतलब ही नहीं थे. अगर ये पहले नंबर नेगेटिव था और मैंने अगर यहाँ +5 लिखा तो भी कोई फर्क नहीं आने वाला है. तो ये अगर नंबर नेगेटिव था और मैंने कहा +5, still will not have any impact. Why? Because most of the operators do not alter the value of the operand on which they operate. ये पहले भी -5 रहेगा और बाद में भी -5 ही रहेगा without any change. Look at this. पहले भी -5, बाद में -5. So did this statement make any change in our program? No, Yes sir. or no? No. इस स्टेटमेंट से अपने प्रोग्राम में कहीं चेंज हुआ है क्या? No, sir. ना. तो ये ना लिखने के बराबर ही है. अगर ये एक्सप्रेशन नहीं भी लिखूंगा तो भी आउटपुट वैसे आएगा जो पहले आ रहा था. -5 तो पहले भी -5, -5, पहले भी -5, बाद में -5. तो लॉट ऑफ टाइम वी फील इन ऑपरेटर का कोई मतलब ही नहीं है. नो, दे आर मीनिंगफुल. मींस दे मे नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड ऑन व्हिच दे ऑपरेट. माइनस फिलहाल कौन सा ऑपरेटर ऑपरेंड पे ऑपरेट कर रहा है? माइनस इज एन ऑपरेटर. तो यहाँ ऑपरेंड कौन है? A. A is an operand. Okay, definition में क्या कहा था हमने? ऑपरेंड का डेफिनेशन लिया था. Operators operate on constants or variables known as operand. So 10 हो, variable A हो, they are operands. So we are now operating on those operands. So A over here is an operand on which you are trying to operate. So minus is an operator, A is an operand, but मैंने कहा most of the operators do not alter the value of the operand on which they operate. तो इसका impact कैसे आएगा? Have a look at this. Suppose I have another variable. हमारे से एक वेरिएबल है रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन नाम का एक वेरिएबल, और यहाँ उस वेरिएबल का वैल्यू इनिशियली 0 है तो प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है. एंड देन इफ आई से रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल -a, वैल्यू ऑफ a इनिशियली जो था वही रहेगा
बट जो रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है उसमें क्या आता है देखते हैं. तो नाउ विल चेक व्हाट्स द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल दैट्स कॉल्ड एज रिजल्ट एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट है? तो आई विल से वेरिएबल जिसका नाम है रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन यार अब ध्यान से देखो. आई एम नॉट ट्रेस द कोड फ्रॉम हियर. ट्रेस करने के लिए यहाँ ब्रेक पॉइंट डाल दिया एंड देन आई स्टार्ट डिबगिंग. यहाँ क्लिक करके मैंने डिबगिंग स्टार्ट किया, या फिर रन में जाओ और यहाँ से कहो डिबग, वो भी कर सकते हैं. अब चालू किया डिबगिंग, इस लाइन तक आ गया. हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसका वैल्यू -5 है. तो जरा वेरिएबल में देखते हैं. हमारे पास वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू -5. इज दैट विजिबल एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. और रिजल्ट एक्सप्रेशन है जिसमें वैल्यू 0 है. और हमने पहला वैल्यू प्रिंट किया, a का वैल्यू बिफोर, ये प्रिंट कर लिया. तो a का वैल्यू बिफोर ये आउटपुट में कहीं तो आ चुका रहेगा. बिफोर a = -5 ये आ चुका है. अब मैं कहता हूँ रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, या जरा वेरिएबल की तरफ देखो. रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -a. जरा ध्यान से देखो a का वैल्यू क्या है -5. एंड रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन फिलहाल 0 है. तो व्हेन आई रन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, देखो इसमें 5 आ गया. दैट मीन्स व्हेन यू इवैल्यूएटेड दिस एक्सप्रेशन इट डिड गेट इवैल्यूएटेड. ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व जरूर हुआ. ये लाइन पे गए हम लोग, वी एक्चुअली वेंट टू दिस लाइन. ये आपका ओरिजिनल वैल्यू -5 था, -5 या ऐसे हुआ -5 सॉरी माइनस ऑफ -5 हुआ एंड माइनस ऑफ -5 gave you +5 यानी 5 आ गया. And that +5 got stored over here. That +5 is what has got stored. So this expression has very much got evaluated. ये नहीं कि वो expression evaluate नहीं हुआ. It has very much got evaluated now. now evaluate हो चुका है. इसका जो आंसर आया that has now got stored into that particular variable. Whatever is the answer, that answer has got stored into the variable. So this expression got evaluated. इस expression का result -5 है and that -5 got stored into this particular variable. And that's what we can see over here. Sorry, ये -5 था. Minus of -5 became +5, and that +5 has got stored into this particular variable. What's the proof? Proof है ना? क्या है proof? देखते हैं अगले लाइन पे जाके प्रिंट करते हैं. a का वैल्यू जब हम लोग प्रिंट करते हैं, look at the output. a का वैल्यू -5 था, जैसे था वैसे ही. ओरिजिनल वैल्यू -5 था, आउटपुट में भी -5 है. But what happens to result of the expression? Check it out. Result of the expression +5 आ चुका है. So keep in mind, the result of the expression and the ऑपरेंड आर टू डिफरेंट केसेस. ये ऑपरेंड है, जैसे a + 5 लिखने पर समझो a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, तो a + b का वैल्यू क्या आएगा? बट a का वैल्यू क्या रहेगा उसके बाद? 10. इसका वैल्यू चेंज होगा. व्हेन आई से a + b, whose value will get changed, a या b? No sir. Whose Result. value will get changed? Result of the expression is 30, but a is what it was and b is what it is. So value of the variables have not got changed. So most of the operators do not alter the value of the variable. जो variable का value है, operand का value वैसे ही रहेगा. They do not alter. So on the same lines, when we write this particular statement, जब आपने कहा -5 a का value है -5, तो minus of -5 now have become +5, and that +5 got stored over here. But a का value जो -5 था, वो -5 ही रहेगा. तो same is the case with plus as well. अगर ये -5 था या -5 था और मैंने लिखा +a, अब मुझे क्या है प्लस ऑफ -5, व्हाट विल यू गेट? -5. -5. तो रिजल्ट एक्सप्रेशन -5 और a का वैल्यू जो -5 था वो भी -5 रहेगा. देखते हैं, ये -5, ये भी -5. दैट्स आल्सो ओके बिकॉज़ आपने प्लस कहा. तो ये एक्सप्रेशन डिड गेट सॉल्व्ड एंड वी कुड सी द इंपैक्ट अ डिफरेंस व्हेन इट वाज माइनस. ये पहले -5 था, मैंने कहा माइनस ऑफ -5 दैट हैज बिकम +5 दैट गॉट स्टोर्ड. तो expression is different and the result of the expression is different. Here a result of this particular expression was assigned to this particular variable, was assigned by using this equal to operator. So we could see the value over here as +5. देखते हैं दोबारा, इसमें देखो result of expression में क्या आ रहा है? +5. Whereas a before and after was still -5. So minus operator या plus operator, unit operator, they do not alter the value. हाँ, minus will negate the value, that's okay. बट वेरिएबल की वैल्यू निगेट नहीं करेगा. रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन में वो निगेटेड रिजल्ट आएगा एंड दैट कैन गेट स्टोर्ड. अगर आपने कहीं स्टोर नहीं किया है, दैट एक्सप्रेशन वाज यूजलेस, उसका कोई पर्पस ही नहीं था.
So we have this arithmetic unary plus and minus. But then we also have to discuss plus plus and minus minus. या plus minus into divide mod, ये भी हमें discuss करना है. तो currently हमने देखे unary operators. Expression is a sequence of operands and operators that reduces to single value. तो हमने a plus b लिखा, तो देखो a and b are operands. Plus is an operator. 10 plus 5 लिखा मैंने, तो 10 and 5 are operands and plus is an operator. So 10 plus 5 का आंसर क्या आएगा? 15. Okay, but understand करो एक चीज, अब 15 कह रहे बराबर है, but when you write this 10 plus 5, so neither will 10 change, neither will 5 change. This entire thing will get evaluated and you reduce to an answer that is 15. Reduction process है, ये दोनों का मिला के आंसर 15 आ गया, और ये आपके रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये 15 is your result of the expression. So it reduces the expression. An expression is a sequence of operators operand that and operators that reduces to a single value. यानी कितना भी बड़ा expression हो, वो solve होने के बाद it will reduce to a single value. Expression can be simple or complex, and there are so many different types of expression that we come across: primary, postfix, prefix, unary, binary, ternary, and so on. So these are various categories of expressions. And we started our discussion with some unary operators right now. Plus a, minus a करके देखा हमने unary. But we are yet to discuss all these other types of expressions. So we saw plus and minus. These are expressions where operators act only on one operand. Plus 5, one operand. Plus a, one operand. Minus a, one operand. Plus a, one operand. The value of operand does not change when unary operator operate on them. When I say plus a, operand की value change नहीं होने वाली है. Minus a, operand की value change नहीं होने वाली है. So if this operator is applied to operand, the operand's value doesn't change. The result of the expression will change. So watch it. A का value 3 था और आपने expression लिखा +3. Expression का result +3 है. A का value before and after 3 था. ध्यान से देखो मेरा मैं कैसे पढ़ रहा हूँ. हाँ मैं reading it. A का value initially was 3. You said +a. +a कहने के बाद भी 3 रह गया. But +a जो आपने लिखा है उसका impact क्या है? Result of the expression +3 है. That's okay. आपने कहा -a. a का वैल्यू इनिशियली 3 था, बाद में भी 3 रहेगा. बट -a जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट विल बी -3 नाउ. विल बी -3. Likewise, value of the variable was -5. You said +5 plus a, हाँ? That means plus of -5. तो पहले भी -5 था, बाद में भी -5 रहेगा. And plus of -5 will also be -5. No change. हाँ, a का वैल्यू इनिशियली -5 था और आपने कहा -a, तो minus of -5 becomes +5. But that's not the value of the variable a. That's result of the expression. A का value even before and after is still -5. It will not really change. ये change नहीं होने वाला है. ये जो पहले था वही रहेगा before and after the expression. Have you understood this particular concept? Quick feedback. Feedback दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? What is we are discussing? वंदना क्या डाउट है? श्वेता क्या डाउट है? सुदर्शन क्या क्वेरी है? सुदर्शन भागमारे क्या क्वेरी है? सुदर्शन लास्ट कॉल बिफोर आई remove you from the meeting. Unwillingly I let remove you from the meeting. सुदर्शन रेस्पॉन्ड करो अगर आप हो मीटिंग में. ऐसे किसी ने जिंदगी में प्रोग्रामिंग नहीं सीखा यार. 4 बार क्या कॉल करना है? ध्यान कहाँ है आपका सुदर्शन? जब आप बैठते हो, आई कुड ऑल्सो हैव ऑल द गैजेट्स विद मी. मोबाइल ऑन रख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, हमेशा बंद. देयर इज नो क्वेश्चन आई विल टर्न ऑन माय मोबाइल व्हेन द लेक्चर इज ऑन. ओके, फोकस चाहिए यार. और इतना ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? व्हेन यू आर डिवोटेड, व्हेन यू आर कमिटेड दैट आई एम गोइंग टू डिवोट 2 hours फॉर दिस सेशन, 1.5 hours फॉर दिस सेशन, वो डिवोटेडली करो ना यार. फोकस अप्रोच रखो. It will create wonders in your life. So that was about unary operators. The next session we'll talk about the plus and minus and other operators. But before that, let me just quickly run through the other arithmetic operators which are there. Which are the other arithmetic operators that we could talk about? Oh, we could talk about the plus and the minus and the into and the divide is what we could see.
Now, if you look at those simple operators which are there, plus, minus, into, divide, let's have a look at them. Okay. So I'm going to carry out some kind of operation to understand that particular behavior, division or things that we plan to look at. एडिशन का तो हमने आज पूरा सेशन ही उस पर डिवोट किया था, which we unfortunately did not record. So I had number 1, number 2, sum. They asked user to the first integer. Person I से accept किया first integer. I asked user to the second integer. Person I से accept किया. What will I do? Why am I not using %d? %d only decimal format. Will only extract input if it is appearing in decimal format. And I will do what? In hexadecimal format or binary format. No, binary may be. Oh, sorry, hexadecimal or octal. And decimal as well. Yes. Decimal. So हमने extract किया integer which may appear in decimal, hexadecimal or octal, any format, that was stored into address of num1. Second integer accept किया, that was stored in address of num2, and then we went on to add those two numbers and we had displayed the result of those two operations. Addition का result क्या है? So this is a simplest code that we can have to understand operation of addition. Yeah, and let's compile this particular code and run this. Yes, Other times also we can use the percentile I for other program, for other operations we can use. Other operation means? Like now what we have used, we can also use this for other programs also. No? अरे of course any program provided वहाँ आपको integer accept करना है तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही चीज यूज करो. समझो आपकी रिक्वायरमेंट ही है कि सिर्फ डेसिमल फॉर्मेट में इनपुट आना चाहिए, then don't use %i. If you write a statement, please enter input in decimal format. For whatever reason you want the input to appear only in decimal format. Then if I say %i, it will allow you to enter in decimal, octal, hexadecimal, everything. I'll use %d. But whenever you give such message, एक simple सा example है. You are writing a program to calculate doing something with the age of the person, and you give a message, please enter your age in years. तो आप expect कर रहे थे वो decimal में डाले, मगर वो hexadecimal में डाल देता है. मेरी उम्र 15 साल है, OXF. You wanted to accept, so we use %i. So whenever you are okay with user entering data in hexadecimal, octal, and decimal, use %i. And if you want only in decimal, then only say %d. अब वो किसी भी program में. Is that okay? Not just when I say plus, please enter the integer. मैंने कहा please enter your roll number. इतना अगर कहने वाला हूँ मैं %i कहूँगा, क्या पता आप में से सुशांत एक एकदम क्रेजी फेलो है, साइंटिस्ट है, एंड सुशांत को डेसिमल में बात ही नहीं करता है. ओके, वी हैव आकाश, वो तो बाइनरी में बात करता है, बट बाइनरी में आपके पास हेल्प नहीं है. बट सुशांत को तो आप लोग हैंडल कर सकते हैं. वो हेक्स में इनपुट देता है तो विल एक्सेप्ट हेक्स. क्या दिक्कत है? Is that okay? Yes. So we are now going to display the addition. So this is the example that we discussed at length, and we realized how it fails. But initially, अब तक जो discuss उस basis पे ठीक है. Please enter the first integer. I say first integer is 33. Please enter second integer. I say second integer is 5. So it says 33 plus 5 is equal to 38. 38 क्या है? इन दोनों का addition है. Write the code in such a fashion that it is readable. Output is also explanatory. You should not keep user guessing. मैंने सिर्फ number 38 screen पे display किया. बेचारा सोचते रहेगा 38 कहाँ से आ रहा है, उसका मतलब क्या है? And say, oh, it's just an addition of these two numbers. That's 38 and so on. So plus operator did add those two numbers. अगर मुझे multiply करना था, तो in that case plus की जगह आप multiply कर सकते थे. Multiply. तो यहाँ plus की जगह multiply. Okay, and then we got a display. Variable का नाम from sum I could change to product and so on. That we'll do later. But that's what you should do. It's not sum now. So don't say sum is equal to num1 plus num into num2. Change the name of the variable, but I'm just leaving it right now. First integer मेरा 40 है, second integer मेरा 8 है, तो कहता 40 into 8 is 380. तो डिवीजन करना था, तो आप डिवीजन स्लैश कह सकते थे यहाँ, और यहाँ भी स्लैश कह सकते थे. Don't say variable name is num, sum. वो चेंज करो, डिवीजन जो भी ऐसा नाम दे दो. एंड अगर आप डिवीजन ले रहे हैं, तो लेट्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ डिवीजन. प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर. मैंने कहा 45, सेकेंड इंटीजर 3. तो 45 प्लस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 15. वर्किंग, डिवीजन में काम चल रहा है. अगर मैं कहता है यहाँ mod gives you remainder. Okay, mod gives you remainder. So if I now want to take a remainder, that means division तो करेगा, हाँ, but display करना है % साइन, तो 2 बार % साइन डालो. देखो एरर दे रहा था.
IDs इतने fantastic है, they don't let you commit mistake. 2% sign will display 1% sign. So if I run this particular program now, and if I say, if I have a number like 10, I say 10 mod 2, बोलेगा 0. यानी 10 5s are 2 5s are 10, remainder is 0. But at the same time, अगर मैंने 10 को divide किया होता with 7, 10 divided by 7, कहता है remainder is 3. Because 7 1s are 7, remainder is 3. So mod operator gives you remainder and division operator gives you quotient. और एक चीज नोट किया है, एक सिंगल mod परसेंट प्रिंट हुआ है. कैसे? क्योंकि आपने यहाँ 2% डाला है, तो यहाँ एक सिंगल परसेंट प्रिंट हुआ है. तो परसेंट इज परसेंट, तो ये है डिस्प्ले मॉड. तो यहाँ हमने मॉडुलस लिया है. मॉडुलस गिव्स यू रिमाइंडर, डिवीजन गिव्स यू क्वोशिएंट. मॉडुलस गिव्स यू रिमाइंडर and division gives you quotient. Okay, so these are some operators which are there, which you have discussed, but there is one care that you have to take when you are using mod. या समझो आप यहाँ यूज कर रहे थे प्लस, सम प्लस कह रहे थे, तो ये as long as it was plus it was okay. If these variables were of type float, ये भी एक float था और ये भी आपका, और इस sum को let me change. I say it's a result. Directly हर जगह change किया result. So that would be better. जो भी result है, ऐसे %.2f round up किया, %.2f, answer is also equal to %.2f करके हम लोग result print करेंगे. Number 1, number 2 and please enter first integer नहीं कहेंगे, फर्स्ट नंबर कहते हैं. तो कुछ भी डाले, इंटीजर डाले या रियल नंबर डाले, कुछ भी डाले. Now let me compile this particular code and let's run this particular code and watch it. हम एडिशन कर रहे हैं. मैंने कहा 10.5, अरे ये तो फेल हो गया. तो आपने यहाँ %i कहा है, यहाँ %f चाहिए था. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू %f चाहिए. स्कैन एफ फेल. इंटीजर i इसे एक्सट्रैक्ट करके आप फ्लोट में नहीं स्टोर कर सकते. So I change it to %f. Line number 12 and 14 I have changed. Now we run the program. I say 10.5 and second number is 5.6. तो कहता है 10.50 plus 5.60 is equal to 16.10. Perfect. राउंड अप वगैरह करके हमने सही आंसर प्रिंट कर दिया. ये एडिशन था. आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे. तो ये मल्टीप्लाई ये जानबूझ के, अगर आप बोलोगे सर क्या बोर कर रहे हैं आप, बट कुछ चीजें देखना जरूरी होता है. यू शुडंट मेक एन अजम्पशन जस्ट बेस्ड ऑन आपको जो लगता है वैसे आंसर आएगा, कोई जरूरी नहीं. इफ आई हैव 2.5 into 5.0, कहता है 2.5 into 5.0 is 12.5. परफेक्ट आ रहा है. ओके, बट देन इफ आई टेक डिवाइड, और मैं डिवाइड करके देखना चाहता हूँ, डिवीजन करके देखना चाहता हूँ, तो देखते हैं डिवीजन, एडिशन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा है, सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं आप, खुद करके देखो. एंड हियर आई गो. ऐसे फर्स्ट नंबर मैंने कहा 10, सेकंड नंबर मैंने कहा 7, कहता है 10 divided by 7 is equal to 1.43. परफेक्ट. अब देखते हैं मॉड. अब मैं कहता हूँ रिमाइंडर चाहिए, तो मुझे बताइए 10 mod 7 का रिमाइंडर क्या आएगा. थोड़ी देर पहले देखा था हमने 0. 3 आएगा. अरे यहाँ क्या एरर दे रहा है इस लाइन पे. परसेंट डिस्प्ले करना है तो क्या करना है, डबल percent आएगा. And now let's run this particular program. After we have made the change, we try to run this particular program and it is generating an error. ये error दे रहा है. नोट करके रखो, mod operator cannot operate on floating point values. तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट मींस फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, तीनों पे. mod operator cannot operate on floating point values. Note करो, whenever in programming I use the word floating point means float, double, long double. मैं सबके बारे में बात करूँ. जब मैं डबल कहूँगा डबल, जब मैं फ्लोट कहूँगा फ्लोट. When I say long double means long double, but if I say floating point, that means it is true for all the three: float, double, long double. So mod operator cannot operate on floating point values. Note करके रखिएगा. So we saw all of them. Basic operators हमने देख लिए. What remains to be discussed is now unary, plus plus and minus minus, and that will be our topic for our discussion next time when we meet.
And those who had not solved the examples, make sure you solve. Don't just write it. Compile करके देखो कि आपको compile करने आ रहा है क्या. Check it out. And if you don't have compiler, do it on online compiler. But I will still suggest you strongly Visual Studio या जो भी मैंने पैकेज आपके साथ शेयर किया है वहां से डाउनलोड कर लो और वो कोड कंपाइल खुद इंस्टॉल करके कंपाइल करके देखो. So unless you don't compile the code on your own, you will never understand the entire cycle. कोड लिखा, सोचा, लिखा, कंपाइल किया, रन करके देखा, that will complete the cycle. So go through that exercise, write the same program addition of two numbers. और जिन्होंने लिखा था और मैंने कहा जिन्होंने हमने डिस्कस किया जरा कोशिश करो उसमें क्या गलत गया है सॉल्व करने की कोशिश करो. Because we saw the result were going wrong. Why was the result going wrong? Just give a thought and check it out and be ready for the next session where we continue with operators in C once again. So with that note, we stop here today. Thank you all for attending the session. See you next time. Take care. Love you all. Bye-bye. Any questions? I'm here.